Hello kids, today we are on our first lesson of our 7th standard GK subject. Hello, myself Vipin Ashok Bahane, I am your GK teacher and today we are going to start our first lesson of GK subject. Today our topic is the world of animals. Today we will discuss about the living world. The section of our lesson is living world. Animals have their own ways of living. They have a lifestyle of their own that is different yet intriguing. Let's check how much we know about them. Okay, animals live with their own way. There are many kinds of animals in the world. Some are wild animals, some are domestic animals. Okay, domestic animals are those animals who live with humans because we took many different things which are useful for us only from that animal. That's why we just domesticate that animals. But in case of wild animals, they are not useful for humans, but they are many of useful for the chain of the life cycle. Okay. So the chain of life cycle should be continued without any mistake, without any stuckness. That's why these wild animals are most useful for the living world. And today only we will discuss on this living world. That is from the lesson of the world of animals. Let's check how much we know about them. देखो एनिमल्स के बारे में हम तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स हो या डोमेस्टिक एनिमल्स हो, उनमें भी बहुत सारे टाइप्स आ ही जाते हैं. क्योंकि देखो some animals are terrestrial animals, some animals are amphibians, some are arboreal animals, some are aquatic animals. And to know more and more about them, we have to study about them from this GK subject. And today we will discuss about some of the examples of these arboreals, some of the aquatic, some of the amphibians animals. So let's start out from our first question. You will have three options and later on I will give the answer of the same question. First question is that where does an arboreal animal live? There are three options of this question. First option is A, in water, B, on trees, and C option is underground. So I think you are just thinking about the question and I think you got the answer. The answer is on trees. Arboreal animals just fly in the sky and they used to make their shelter, their home on the top of the tree, on the middle of the tree, wherever. So the first answer of the first question is on trees. Second question, which animal lives in a drain? Which animal lives in a drain? So there are also three options of this question. First one is squirrel, second option B, this is lion, and third C question is camel. The answer of this question is it's A, squirrel. Third question, which animal has a breed called Pekingese? A, horse, B, dog, C, rat. The right answer is B, dog. Fourth question, what is an animal that preys on other animals known as? A, predator, B, producer, C, autotroph. देखो मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स एन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो लॉयन, टाइगर, वुल्फ, फॉक्स, चीता, जगुआर, लेपर्ड, these animals feed on the flesh of other animals and other animals are herbivorous animals like example deer, rabbit, cow, again buffalo, wild buffalo, wildebeest, they are herbivorous animals and lion, tiger, wolf, they are carnivorous animals. So the same thing, कार्निवरस एनिमल जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को मार कर के खा जाते हैं. So here are three options: predator,
Fifth question. Where do we find the dewlap in cattle? Dewlap in cattle. A. Throat, B. Tail, and C. Hind. Answer of this question is A. Throat. 6. Which of the following mammals can jump the highest? देखो एनिमल्स जंप भी कर सकते हैं और कैंगारूज जो होते हैं, अगर आपने कभी कैंगारूज को देखा होगा, कैंगारूज ऑल्सो नोन एज द नेशनल एनिमल्स ऑफ कैंगारूज। और ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया देश को नाम ही द कंट्री ऑफ कैंगारूज बोले जाते हैं। सो कैंगारूज को अगर आपने कभी दौड़ते हुए देखा होगा तो वो सब जंप करते हुए वो रन करते हैं, या वो फास्ट जब चलते हैं तो वो जंप करते हैं। So which of the following mammals can jump the highest? A. Dog, B. Puma, C. Cat. So here इन थ्री ऑप्शंस में से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्यूमा। प्यूमा इज एन एनिमल सिमिलर टू आवर wild cat, but puma is much bigger than our domestic cat or wild cat, you can say. 7. What are the animals that live both on land and in water called? There are three options. A. Fish, B. Amphibians, and C. Reptiles. Fish जो है वो सिर्फ पानी में ही रहते हैं, अगर फिश को पानी में से निकाल दिया जाए तो वो बिनो मर जाती है। जैसे हमने वो बचपन में वो पोएम भी सुनी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। So here option A fish, B amphibians, C reptiles. So the answer of our question is amphibians. A. What is the resting place of wild animals called? What is the resting place of wild animals called? A. Lair, B. Kennel, C. Cage. It's A. Lair. L-A-I-R, lair. 9. Which animal likes to take mud bath to keep its body cool? देखो forest में during the summer season the temperature becomes so much hot, temperature getting high, and then animals get suffocated because of this high temperature in wild region. So many of wild animals use to take just mud on their body to keep their skin cool, because most of the animals skin is so soft and sensitive, like hippopotamus. हिप्पोपोटामस भले ही आकार में कितना ही बड़ा हो, लेकिन उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर हिप्पोपोटामस अगर ड्यूरिंग समर सीजन दोपहर के समय अगर ज्यादा देर बाहर खड़ा रहा पानी में तो उसके बॉडी पर रैशेस आना शुरू होता है और उसकी स्किन फटना शुरू हो जाती है। सो ऑप्शन ए पिग, बी कैट, सी पोलर बियर. So here is option A. Pig just like to take mud bath to keep its body cool. 10. Which animal has an average lifespan of 15 years? A. Tiger, B. Cricket, C. Moth. So कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है, उसका जो जीवन काल होता है वो 15 साल का होता है? तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, वो है फर्स्ट टाइगर, second cricket, third is moth. So the answer of this question is tiger. Averagely एक टाइगर तकरीबन नियर अबाउट 15 इयर्स तक जिंदा रह सकता है, और इतना ही लाइफ स्पैन हम किसी लॉयल का भी बोल सकते हैं अगर उसका शिकार ना हो या वो किसी अपने सिबलिंग्स के से फाइट में मारा ना जाए. So today in our first lesson we learn about the world of animals, and our second lesson is facts about tennis. I think many of you just like to play many of games, either games, cricket, football, tennis, baseball, basketball, the games are there. But today in our second lesson, the title of the lesson is facts of tennis. So we will try to just finish our second lesson also in this video. So lesson number 2, facts of tennis. Tennis is a game which can be played with only two opponents. Only two players are sufficient to play this game. But if doubles game are there, then on both sides two players can play this game, and it will
तीन ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर चूज करना है. So here total 10 questions are asked about the facts of tennis and every question has 3 options. So our first question is, who was the first unseeded man to win the Wimbledon? Option A, John McEnroe, B, Boris Becker, and option C, Roger Federer. So the answer is Boris Becker. I think you also know the answer. इनमें से इन तीनों में से अभी जो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीत चुका है वो है रॉजर फेडरर, और रॉजर फेडरर के बाद में जिसका नंबर आता है वही नोवाक जोकोविच. अब तक रॉजर फेडरर ने तकरीबन 20 ग्रैंड स्लैम, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक रॉजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम्स कॉम्पिटिशन जीतकर उतने कप्स वो जीत चुका है. और उसके बाद में आता है नोवाक जोकोविच, तो उसने अब तक 18 जीत चुका है. क्वेश्चन नंबर 2, Who among the following is a professional tennis player from Spain? ओके देखो, रॉजर फेडरर जो आता है वो आता है स्विट्जरलैंड से. बोरिस बेकर जो आता था वो आता था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर स्पेन से बिलोंग करता है. सो यू हैव आल्सो 3 ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज राफेल नादाल, सेकंड इज रॉजर फेडरर, एंड थर्ड वन इज जॉन मैकरोने. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉजर फेडरर तो स्पेन का है ही नहीं, वो है स्विट्जरलैंड का. सो हियर इज आंसर ऑप्शन ए, दैट इज राफेल नादाल, बिलोंग फ्रॉम द स्पेन. 3, हाउ मेनी टाइम्स डिड मार्टिना नवरातिलोवा विन द विंबलडन सिंगल्स? देखो, जिस तरह से जेंट्स या मेल टेनिस की कंपटीशन होती है उसी तरह से उन्हीं के कंपैरिजन में भी लेडीज की यानी फीमेल्स की टेनिस कंपटीशन भी देखी जा सकती है. और यहाँ पे पूछा गया है कि मार्टिना नवरातिलोवा ने विंबलडन सिंगल्स कितने बार जीते हैं. तो ऑप्शन दिए हैं 9, 8, 6, 9, 8 या 6 बार. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9 टाइम्स. मार्टिना नवरातिलोवा won the Wimbledon competition for 9 times. 4, which US women tennis player has won the French Open a record 7 times? Option A, Mola Mallory, option B, Grace Ewart, and option C, Jana